सिलेक्शन चाहिए तो टेंस स्ट्रॉन्ग करो, एंड अगर टेंस स्ट्रॉन्ग है तो आज टेस्ट करो. Hello there, welcome back to my channel Fit the Lit, where we fit literature to its rightful standards. Today's session is a part of series called 15 Minute Sprint to Selection. Yes, you heard me right. 15-minute sprint to selection, where we are learning grammar topics in just 15 minutes. Today's class is going to be all about tenses and attempting questions that are similar to previous year patterns. So let us start with the session without any delay. First of all, let me discuss the exam strategy. You need to identify, see, you need to go step by step here. Identify the time reference. आप रट्टा मार लो चाहे रूल्स का, बट अगर आपको यूसेज नहीं पता, देन ऑफ कोर्स यू विल नॉट बी गोइंग टू स्कोर इन टेंसेस एट ऑल, राइट? सो आइडेंटिफाई द टाइम रेफरेंस, दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप. चेक द मीनिंग एंड नॉट द वर्ब फॉर्म. ऑफ कोर्स हमें वर्ब फॉर्म तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग लगानी होती है, तो पहले हमें मीनिंग देखना है, time reference देखना है, and then we need to apply the tense. Look for hidden time words and ask, is the sequence clear or not, right? क्योंकि अगर हमारा सीक्वेंस क्लियर होता है तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस. और अगर हमारा सीक्वेंस क्लियर नहीं होता है, एट दैट टाइम वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट? Again, I would like to remind you, tense questions are logic questions. They are not the questions that you can attempt as per your whims and fancies. नहीं, logic apply करना है and accordingly you need to attempt the questions. And अगर ये questions में आपके 100% marks आ गए, then you are all set for tenses. But अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है, then I must warn you कि आपको tenses revision की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. And of course you need to do it. Let us begin with the very first sentence. The first sentence is on your screen. Identify the incorrect part of the sentence. And what is the sentence? I am knowing him for many years. Of course, the students who have come here after viewing the core concept class, उनको समझ में आ जाएगा कि this is actually a stative verb. तो ये no होना चाहिए. And the tense that we need to use in this particular case is actually simple present tense. So part A is the correct answer. There is an error in part A. But let me go further. अगर आपको ये लगा कि यही एक गलती है सेंटेंस में, तो यानी कि आपके टेंसेस में भी कुछ गड़बड़ है. Why? Let me explain. I know him for many years. Duration कभी भी simple present tense के साथ नहीं आती. So although it is a stative verb, लेकिन यहाँ पे simple present tense तो नहीं आएगा. So what should be the correct sentence? I have known him for many years. This should be the correct sentence. Present perfect tense लगना चाहिए यहाँ पे. सिर्फ no गलत करने से या फिर knowing को पहचानने से यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाएगी, right? तो यहाँ पे दो गलतियां थी. How many of you were able to identify both the mistakes? Comment करो comment box में कि question 1 you were able to identify 2 mistakes. If not, कोर कॉन्सेप्ट की क्लास देखो, वेरी इंपॉर्टेंट. वो मिस हुई तो पक्का रिग्रेट होगा. Let us cross verify the answer, whether it is A or not. Yes, definitely A. And I have also discussed the present perfect case, that what is the sentence going to look like when it is rectified in all its forms, right? Sentence 2. He is playing cricket every Sunday. I'm giving you 5 seconds. Type the correct option in the comment box. Question 2. Where is the error? A, B, C or D? He is playing cricket every Sunday. Of course, the sentence, that the part that has error is actually A again, because it is this particular sentence is talking about which thing? It is talking about routine. It is talking about a routine thing every Sunday. तो एवरी संडे जब यहाँ पे आ गया तो ऑफ कोर्स रूटीन थिंग, whenever we have to talk about a routine thing, then it is always simple present tense. तो यहाँ पे he plays आना चाहिए. Again, the error is in part A, right? Let us move forward. Question number 2. Yes, question number 2 is correct. Simple present tense should be there, right? चलो, question number 3.
Question number 3 is on your screen now. She has completed the form yesterday. Very nice question. Anji, so which part has error? She has completed the form yesterday. Definite time दिख रहा है हमें. Yesterday. So that means definite time में कौन सा tense आएगा? Simple past tense. So again, she has completed नहीं होना चाहिए. She completed. Again, part A is having the error. This sentence should be she completed the form yesterday. And you know the explanation. अगर अभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं पता है, कोर कंसेप्ट की क्लास देख के आइए, मजा आ जाएगा क्वेश्चंस में. यस. क्वेश्चन नंबर 4. I lost my wallet, so I have informed the police. Very nice. Again, यहाँ पे डबल ट्रैप है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में था, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 में भी डबल ट्रैप है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डबल ट्रैप? कहां पर है बताइए. वेयर इज द एरर? सी इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस गलतियां बहुत सारी है, राइट? दो तो मैं जैसे भी एक्सप्लेन नहीं करने वाली. I lost my wallet, so I have informed the police. यहाँ पे the first part of the sentence uses which one? First part of the sentence uses simple past tense. I lost my wallet, so I have informed the police. तो यहाँ पे ये जो गलती है सबसे पहली कि ये सिंपल पास्ट टेंस है और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इन दोनों का कोई मैच होता ही नहीं है. हमने देखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का मैच होता है. तो अगर हमें करना भी था तो हम लोग वो कर सकते थे. क्या कर सकते थे कि वी कुड हैव एक्चुअली यूज्ड पास्ट परफेक्ट प्लस सिंपल पास्ट. लेकिन क्या यहाँ पे आएगा? भाई तुम्हारा लॉस्ट हुआ वॉलेट, तभी तो तुमने जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया या पहले इन्फॉर्म कर दिया? तो लॉजिक एंड सीक्वेंस इज ऑलरेडी क्लियर. तो सीक्वेंस हमें क्या बताने की जरूरत है? अगर नहीं है तो ये हमें चाहिए ही नहीं. तो हमें क्या करना था यहाँ पे? तो हमें यहाँ पे करना था कि सिंपल पास्ट टेंस, या तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करें या तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें. हमें दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं थी, राइट? So what could we have written? I lost my wallet, so I informed the police, right? Either this could be the sentence or I have lost my wallet, so I have informed the police. यहाँ पे दोनों tenses same होने थे. Either it could be simple past tense or it could be present perfect tense. दोनों correct है. But if you ask me, priority will be given to simple past tense, right? Chalo, let us move forward and let us try to look at the answer. Okay, what is the correct answer for question number 4? Of course, A. Present result, present perfect tense. I have lost. तो हमारा क्या होना चाहिए? A ही होना चाहिए. Otherwise also answer C is also acceptable. That means कि A part में भी error हो सकती है and C में भी हो सकती है. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं KVS और NVS में एंड बच्चे घबरा जाते हैं. इंटरनेट पे एकदम फाइटिंग चल जाती है, ए सही है सी सही है. अरे भाई दोनों सही है. अब वो तो केवीएस पे डिपेंड करता है कि किसकी आंसर की चलेगी, बट एज पर द ग्रामर रूल्स दोनों सेंटेंस ठीक है, राइट? चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड. Let us look at question number 5 now. Hardly had he reaches the station when the train departed. Now look at the sentence formation here. Two events are there, and of course the logic, the sequence is not clear. You need to put the sequence right there. So of course, what is the tense that you are going to use? You need to use past perfect tense plus simple past tense, right? So यहाँ पे look at this one. When the train departed. तो ये तो हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? Simple past tense, right? Simple past tense is there. But यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था? सिंपल. यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए था, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रीच्ड क्या दे रखा है? रीचेस. सो ऑफ कोर्स द एरर इज इन पार्ट बी. इट शुड बी हार्डली had he reached the station when the train departed. So it is option B. Let us cross verify.
Answer B. So hardly had he reached the station when the train departed. Question number 6. Identify again the incorrect part of the sentence. After she had finished breakfast, she left home. What do you think? Where is the error? After she had finished breakfast, she left home. Do you think the past perfect tense, the use of past perfect tense is appropriate here in this particular sentence? अरे भाई खाना खाएगी तभी तो घर से बाहर जाएगी, राइट? अब ये मत बोलने लग जाना कि भाई कई लोग तो एम्प्टी स्टमक चले जाते हैं. नो, हमें लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि ऑफ कोर्स she had her breakfast, then only she will leave the home, right? So after she finished breakfast she left home, but यहाँ पे had है, ये had नहीं होना चाहिए. It should be simple past tense only. So where is the error? Error is in part B. Let us cross verify our answer. Yes, it is simple past. Simple past tense is enough. We do not need to use past perfect tense. Fidelity Pro Tip for tenses. In tense error detection, the examiner hides the time and meaning reveals it. So what do you need to do? You need to actually go by the meaning. हमें meaning देखना है, हमें time देखना है. If we are able to identify the time, the sequence of the action, then definitely there can be no error in tense usage. This brings us to the end of the session where we tried to practice our knowledge of tenses. If you scored a 6 on 6, share your score in the comment box and let me know that you are a pro in tenses. If you liked the video, like it, share it with your friends so that they can also benefit out of it, and subscribe to my channel Fit the Lit, where we fit literature to its rightful standard and we always try to remain lit.